So today we are going to discuss counters in PLC. As of now, we have discussed about timers in PLC, and the last topic of this unit is counter. So to discuss counter, we should first understand. So okay. So I need two things for counter. Number one, what I need is counter input. Then I need preset value, and then I need counter bit, which is done bit again, as is it was in the case of timer. टाइमर में हम लोगों ने 3 बिट पढ़े थे, इनेबल बिट, टाइमर टाइमिंग बिट एंड डन बिट. मगर यहाँ काउंटर में सिर्फ एक बिट होता है, डन बिट, दैट वी विल डिस्कस. ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, ओके, फॉर ऑपरेशन ऑफ काउंटर. So let us see what is the basic operation of counter. So I will draw power lines. This is ladder diagram, and then I have an input to the counter, which is normally open switch, a contactor. Then I will make connect the counter here. जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि काउंटर दो तरीके के होते हैं, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर. तो इसमें भी जो है वो वी विल स्टडी दैट इट इज CPU काउंटर अप. तो इसके अंदर हम लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, काउंटर अप, यानी अप काउंटर. ये डाउन नहीं करेगा बल्कि अप करेगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से. देन आई विल हैव काउंटर एड्रेस C50. एलन ब्रैडले रॉकवेल ऑटोमेशन का जो काउंटर है उसमें जो जैसे हमने टाइमर में क्या किया था, T40, T41, T42, इस तरीके से हम एड्रेस देते थे. उसी तरीके से काउंटर में हम C5 देते हैं, C50. अगर आप दूसरा काउंटर यूज़ करेंगे तो C51 एंड सो ऑन. देन आई विल बी हैविंग प्रीसेट वैल्यू. लेट्स से हमें 5 बार काउंट कराना है, सो 5C. इसमें टाइमर नहीं है तो टाइम का बेस नहीं आएगा, इट इज़ अ काउंटर. So basically it will be counting 5 times, and then I will have accumulator. तो accumulator का काम वही है जो काउंट करेगा, and then the moment accumulator value is equal to the preset value, done bit enable हो जाएगी, right? So this is my input, this is input 0 0, and then what I have is I have a done bit, and then let's say output whatever I have. Let's say I have a motor, तो मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, और दिस इज डन बिट, एंड इसका एड्रेस वही होगा जो काउंटर का एड्रेस होगा, C50. सो जैसे ही आपने इस I0 को पुश बटन को आपने प्रेस किया, काउंटर ने एक काउंट कर लिया. ना रिमेंबर, इस काउंटर में और टाइमर में थोड़ा सा फर्क है, और फर्क क्या है कि वहाँ आपने पुश बटन को जब दबाया था तो आपने इनेबल बिट से उसको होल्ड कर दिया था. यहाँ पर काउंटर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, इसमें कोई होल्ड नहीं होगा.
जब एक बार दबाएंगे तो काउंटर एक काउंट कर लेगा, जब दो बार आप दबाएंगे तो दो काउंट करेगा, तीन बार दबाएंगे तो तीन काउंट करेगा. So every time you press this push button, it will count one. Okay? But now the question comes, क्या फिजिकली ये पॉसिबल है कि एक आदमी बैठ के इसको दबाता रहे? The answer is no. Physically it is not possible. So what needs to be done is इसमें सेंसर्स लगे होते हैं. फॉर एग्जांपल एक ऊपर से आपने मोशन सेंसर लगा दिया, एंड देन विद दिस मोशन सेंसर अगर आप कोई इवेंट कंट्रोल करें, जैसे मान लीजिए कि कन्वेयर है, उसमें 5 इन्वर्टर आपके बारी बारी जा रहे हैं, एंड आफ्टर देयर विल बी अ गैप बिटवीन दिस टू. जैसे ही एक इन्वर्टर उसके नीचे से गुजरा, उसने एक काउंट कर लिया, फिर दो गुजरा, दो काउंट कर लिया, फिर तीन गुजरा, तीन काउंट कर लिया, राइट. इस तरीके से ऑटोमेटिक सेंस होगा. ये टाइमर की तरह ऐसा नहीं है कि आपने इसको एक दफ़ा एनर्जाइज कर दिया एंड देन इट विल स्टार्ट काउंटिंग. टाइमर में बिट से जो है वो करना शुरू हो जाएगा. नो, यहाँ पर टाइमर में और काउंटर में ये फ़र्क है. सो काउंटर में जब पुश बटन एक बार दबाएंगे तो एक बार काउंट करेगा. तो जैसे हमने यहाँ प्रीसेट 5 लिखा है, तो ये पुश बटन 5 बार प्रेस होगा, या पुश बटन के नाम पर कोई सेंसर हो, उसके नीचे से कोई चीज़ गुजर रही हो, तो वो उसको 5 बार जब सेंस करेगा कि 5 आइटम का, देन ओनली द वैल्यू ऑफ accumulator will be equal to reset value. Is this clear? Yes, sir. Okay. So once the value of preset is equal to accumulator, so what will happen then? At that time, this run bit is high, so ये इस बिट को हाई कर देगा. जब इस बिट को हाई करेगा तो ये जो नॉर्मल ओपन है कॉन्टैक्टर, दिस विल बिकम नॉर्मल क्लोज, और ये आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा. तो दिस इज योर एड्रेस 0001, एंड देन हम आखिरी में किसी भी लैडर डायग्राम पीएलसी प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं पीएनडी से. दिस इज हाउ काउंटर वर्क्स इन पीएलसी. सो इसमें टाइमर और काउंटर में दो चीज़ें बेसिक डिफरेंस है. एक तो वो उसमें कोई इनेबल बिट नहीं होती है, कोई टाइमर बिट नहीं होती कि आप जो है वो उसको एनर्जाइज करके छोड़ दें एंड इट स्टार्ट्स काउंटिंग. नंबर वन. नंबर टू, उस पर कोई बेस वैल्यू नहीं है. वहाँ पर बेस वैल्यू था सेकंड है कि मिली सेकेंड है कि माइक्रो सेकेंड है कि आवर्स है कि मिनट्स है. दिस वाज द बेस वैल्यू इन द केस ऑफ टाइमर. यहाँ पर कोई बेस वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट अ काउंट. So these are the two major differences. Now coming, let's come to a problem. Let's solve one problem. Then things will become more clear. So what is the problem? So the problem is statement L is a lamp, right? It goes on at count 10 and goes off at count 20. Okay? आपको एक लैडर डायग्राम बनाना है जिसमें एक लैंप को आप ऑन करना है जब काउंट 10 हो जाए, और इसको ऑफ करना है जब काउंट 20 हो जाए, एंड देन यू हैव टू रीसेट द काउंटर. आफ्टर दिस ऑपरेशन you have to reset the counter. That is what needs to be done. Okay, so let us solve this. So let me draw the power lines. This is one power line. This is another power line. Then we will write the program in ladder diagram. So let me draw this. So I have first an input to the counter.
So I have an input whose address is 0 into 0, and then I will have an up counter. So this is CPU counter up. So I will write here counter up, then counter address, as I said, C50, then reset वैल्यू कितनी है 10, then I have accumulator. So what will happen the moment you push this button? How many times? Reset value is 10. So you have to push this counter operation is to be done by 10 times. Means it is having a sensor. तो जैसे ही आपने एक दफ़ा इसको प्रेस किया तो व्हाट विल हैपन, एक काउंट हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, एक आ जाएगा, फिर दोबारा ये जब सेंस किया दोबारा नॉन क्लोज हुआ तो ये 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 बार हो गया। सो व्हाट विल हैपन वंस दिस हैपन्स, सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आप इसके क्लोज, अब आप इसको क्या करेंगे, इसका जो डन बिट है, डन बिट एड्रेस सेम होगा एज ऑफ काउंटर. दिस डन बिट इज नाउ कनेक्टेड विथ लैम्प. तो जैसे एक्यूमुलेटर प्रीसेट के बराबर हो जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी क्लोज, और ये क्लोज हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, द डन बिट इज हाई मींस दिस कॉन्टैक्टर इज क्लोज. सो व्हाट विल हैपन, दिस लैम्प विल इग्नाइट. नाउ ये तो पहला टास्क हमने पूरा कर लिया है कि लैम्प गोज ऑन एट काउंट 10. द सेकेंड टास्क इज लैम्प गोज ऑफ एट काउंट 20, यानी 10 काउंट होने पर ये ऑन हो गया और 20 काउंट होने पर ये ऑफ हो जाएगा. ओके, सो व्हाट नेक्स्ट, देन आई नीड वन मोर काउंटर. So I'll have an input here, then I will have one more counter, the second counter. So this is CPU, then this is counter up, then I have counter address. Now this will be another counter in the same program, so it will have different address, C5.1. Earlier it was C5.0, which was for earlier one, and for second counter it is C5.1. Now reset value. Reset value is 20. लिखा हुआ है 20, and then accumulator. अच्छा, ये 10 और 20 कहाँ से स्टार्ट होगा? ऐसा नहीं है कि वो 10 खत्म होने के बाद फिर 20 स्टार्ट करें, नहीं, 0 से स्टार्ट होगा. 0 से 10 जब काउंट पहुंचा तो ऑन हो गया, और 0 से 20 जब पहुंचा तो ऑफ हो गया. मीन्स कि हमारा इनपुट है फॉर बोथ द काउंटर्स रिमेन सेम, यानी जैसे आपने इसको प्रेस किया ये भी ऑन हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी ऑन. सो जब ये ऑन हो गया, जब ये 20 पहुंचेगा तो लैंप ऑफ हो जाना चाहिए. सो इन दैट केस व्हाट यू नीड इज बेसिकली ये इसका जो डीएन बिट है, यानी जो इस काउंटर का डीएन बिट है, दैट डीएन बिट
नॉर्मली क्लोज रख के आप यहाँ यूज करेंगे C5 जो इसका एड्रेस है। तो जब तक ये हाई नहीं होता है डन बिट, ये नॉर्मली क्लोज रहेगा। जैसे ही 20 काउंट हो जाएगा तो ये डन बिट इसका हाई हो जाएगा एंड दिस विल ओपन दिस स्विच, सो लैंप आपका ऑफ। सो व्हाट ऑपरेशन you have achieved? You have achieved this operation by using these two counters. What is important? How to use the done bit of each counter in your PLC ladder diagram. अब इसमें आगे या तो क्लियर है कि कोई डाउट किसी को? Anyone is having any doubt? भाई किसी को कोई डाउट? No, sir. Okay. Let me see how many people are joined. 30. People are improving day by day. That's it. अब इस पे प्रॉब्लम का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि यू हैव टू रीसेट द काउंटर, यानी इस काउंटर ने 20 तक काउंट कर लिया, अब आप इसको रीसेट करिए, राइट? आप रीसेट कैसे करेंगे? अब इसके बाद यानी यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए यही पर बना देते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस हियर अराउंड। So I'll make one more power line. Okay, and then I'll be using green. So देखिए सबसे आखिरी में यानी 20 के बाद हम रीसेट कर सकते हैं, 10 के बाद हम रीसेट नहीं कर सकते हैं। So what I'll be using is I'll be having one done bit and then क्योंकि दो काउंटर है, so PLC में रीसेट का कमांड होता है RES, और ये भी इसको पैटर्न में हमने लगा दिया RES एंड देन दिस इज गॉन। इसका एड्रेस है C50 और इसका एड्रेस है C5-1, और ये डन बिट जो है ये किसकी होगी? काउंटर 1 की, बिकॉज 20 के बाद ही हमें करना है, ये तो 10 पर रुक जाएगा, 10 काउंटर की, मगर ये 20 तक काउंट होगा। तो जैसे ये काउंट होगा तो इसका जो एड्रेस है इस डन बिट लगाएंगे, और जैसे ये एक्यूमुलेटर 20 के बराबर होगा दिस विल बिकम नॉर्मल क्लोज। जैसे ये नॉर्मल क्लोज होगा ये रीसेट का कमांड यहाँ पर आ जाएगी एंड ये दोनों काउंटर्स को रीसेट कर देगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। सो what you can write here is this is your address 0000 0001 0002 0003 and 0004. This is the complete program, ladder diagram, PLC program of the problem given to us. Clear है? कोई डाउट किसी को? No? Are you with me? No, sir. Okay, so now let's have some brainstorming problems. तो एक प्रॉब्लम जो है वो मैं यहाँ देता हूँ आपको, and that problem we will solve. So the problem statement is, which is very interesting, when counter 1 reads 9, then output A goes on. When counter 2
reads 8, output B goes on. When both A and B goes on, output C goes on, and then what you have to do, रीसेट द काउंटर. जैसे सी ऑन हो गया आप काउंटर को रीसेट कर दीजिए. ये प्रॉब्लम क्लियर है. बेसिकली दो काउंटर हैं C1 एंड C2. जब काउंटर 1 9 रीड करता है तो उसका आउटपुट ए को ऑन करता है. ए कुड बी एनीथिंग, मोटर, लैम्प, एनीथिंग. काउंटर सी जब 8 रीड करता है तो आउटपुट बी ऑन हो जाता है. जब दोनों ऑन हो जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज आउटपुट सी ऑन हो जाता है. जब भी आउटपुट सी ऑन हो जाए उसके बाद आप काउंटर को रीसेट कर दीजिए. यू वांट टू ट्राई? Yes, sir. Okay, so I'm giving you 5 minutes. Is it 12:30? 12:35 again, I'll come back. So try, and then I'll ask you something. You have 5 minutes time. Yes, sir. Okay, good. So let me solve this problem. जिन लोगों ने किया है वो मैच कर लें whether this is what you have done is correct or not. So I have power lights. Then I will draw a run. So I have first counter. This is C2U1, you can say. So I can write counter up, and I can give address as per Allen Bradley configuration C5.0. Then reset value कितनी है यहाँ पर 9, 9 count, then accumulate. Okay, and this is input. Once this counts 9, so what happened?
जब ये 9 काउंट कर लेगा फिर क्या होगा? On this counts 9, then you have to use done bit, and then output A goes on. So इस done bit का एड्रेस क्या होगा? C5.0, and this is your A as the output that goes on. Okay. अच्छा, यानी ये काउंटर ने, ये सेंसर है, या एक मतलब काउंट किया, 2 किया, 3 किया, 9 जब हो जाएगा तो डन बिट हाई हो जाएगा. डन बिट ऑन होने का मतलब ये C50, दिस वन, this gets normally closed, or output A will go high. When the same problem, the second statement is when counter 2 read 8, then output goes B goes on. Then I need another one. So I need one more counter. So this is my counter. Let's say CPU 2. Again, this is counter up. The counter address is now C5.1. इसका preset value 8 है. Then accumulator. So इस पर भी सेम इनपुट होगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम में ये नहीं दिया हुआ है कि एक काउंटर करने के बाद फिर दूसरा काउंटर आएगा स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम ये कह रहा है कि दोनों साथ साथ, यानी फ्रॉम 0 एक 9 काउंट करेगा तो ए आउटपुट हो जाएगा, एंड फ्रॉम 0 अगर 8 काउंट करेगा तो बी आउट हो जाएगा. सो द इनपुट विल रिमेन सेम, दिस रिमेन सेम. सो once, then I'll use the dn bit, done bit of this counter. इसका एड्रेस हम देंगे यहाँ पर C51, and then I have B. B goes on. ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहाँ तक तो ये बहुत क्लियर है. अब जो तीसरी स्टेटमेंट है इसमें, द थर्ड स्टेटमेंट विच इज सेइंग दैट बोथ ए एंड बी गोज ऑन. जब दोनों ऑन हो गया तब सी ऑन हो जाए. जैसे दोनों ऑन हुआ तब सी ऑन हो जाए. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक इसका डन बिट और इसका डन बिट, C50, C51, then this is C. जब ये ऑन हो गया तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और ये ऑन हो गया तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो C goes high, राइट. इसका पाथ क्लोज हो गया. दिस इज हाउ इट इज रन. तो जब ये दोनों ऑन हो गया तब इसका पाथ क्लोज हो गया. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो सर. सर इसमें सर एक इसमें काउंटर को सर हम एक डन अलग C52 है, रिपीट करिए. सर काउंटर को सर इसमें पैरेलल में नहीं ले सकते सर? पैरेलल में कैसे लेंगे सर? क्योंकि सर एक इनपुट देना है सर, तो जैसे कि हम आउटपुट को पैरेलल में ले लेते हैं तो काउंटर को नहीं पैरेलल में ले नहीं, लेते हैं. आप सीक्वेंस समझिए. जो प्रॉब्लम में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका ये पावर डायग्राम है, जो लैडर डायग्राम है, ये रीड करता है स्टेप बाय स्टेप. तो जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम दी हुई है उसी स्टेप में आपको करना है. तो प्रॉब्लम की स्टेप क्या है? सबसे पहले काउंटर 1 ऑन होगा, उसके बाद ए आउटपुट ऑन होगा, उसके बाद काउंटर 2 का जो सीक्वेंस है वो आएगा, फिर ये बी ऑन हुआ, उसके बाद ये सी ऑन हुआ. तो ये जो प्रोग्राम रन होता है पहले इस लाइन को रीड करेगा, फिर 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 इस लाइन को रीड करेगा, राइट. तो वो सीक्वेंस तो बनाना बहुत ज़रूरी है. आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों को पैरेलल में कर दें और फिर जो है वो एक को इसके साथ जोड़ दें. नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट. सो द सीक्वेंसिंग यहाँ तो मान लीजिए कि हो सकता है किसी तरीके से आप जोड़ दें, बट थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई तो उसमें सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बेसिकली दिस PLC डायग्राम इज लिंक्ड विद सम ऑपरेशन व्हिच इज हैपनिंग इन इंडस्ट्री. अगर आपने सीक्वेंसिंग बिगाड़ दी तो फिर वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके सर, गॉट इट. अच्छा,
अब ये कह रहा है अगला उसमें कि साहब दोनों काउंटर्स को रीसेट कर दीजिए। जैसे सी ऑन हो गया उसके बाद दोनों काउंटर्स को रीसेट कर दीजिए। ओके, और इसका हम एड्रेस दे रहे हैं आउटपुट 0 to 0, 0 to 0। इसका ये आउटपुट है आउटपुट 0 to 1, ये आउटपुट है आउटपुट 0 to, ठीक है, ये आउटपुट 0 to 1। Now it is saying to reset the counter after C goes high. So resetting के लिए आप क्या करेंगे? तो मैं उसी कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ जहाँ मैंने वहाँ बनाया था। For resetting of counter, what you have is, अब C का देखिए यहाँ पर एड्रेस क्या है। C का यहाँ पर एड्रेस 0.02 है। सो आप उसी कंडीशन में रखिए इसको। जो C का आउटपुट है उसी एड्रेस को आप एक कनेक्टर से जोड़ दीजिए, एंड देन वी गिव अ रीसेट। दो काउंटर हैं तो दो रीसेट कमांड आ गया आपके, ठीक है। देन यू हैव C50 C51। जैसे ही C आपका ऑन हुआ तो क्या होगा? C ऑन होने के बाद व्हाट विल हैपन, ये क्लोज हो जाएगा बिकॉज दिस गोज हाई। C हाई हुआ तो जो उसका स्टेटस है वो यहाँ पर आएगा, दिस गोज क्लोज, तो ये रीसेट कमांड आ जाएगा। तो दोनों काउंटर्स को ये रीसेट कर देगा, राइट। देन यू हैव टू राइट इन and then we'll complete, you have to write the address, hello, 0002 0003 004 and 05 and 006. This is a complete, your complete ladder diagram programming for this problem which we discuss. किसी को कोई डाउट? Any doubt to anyone? No, sir. No, sir. Okay. This finishes your unit 3. This finishes unit 3. From tomorrow we will start unit 4 of PLC, and unit 4 deals with how the arithmetic operation in PLC diagram is drawn. Arithmetic operation, when I say, means if you have a complex equation to be solved, then how you will write program in PLC. That we will start from tomorrow. Okay, so let me share the screen so that I can take your attendance.